Hello, dear children. Our today's lesson in maths is lesson number 8, cards and wheels. My mama cooks in Italy, and mama swims. And a very good morning to all my dear students. How are you? Today in the maths, we are going to start a new lesson. And the name of the lesson is Cards and Wheels. This is your lesson number 8. So everybody will open their textbooks on page number 81. First of all, you will write here today's date 23/1/2021 and classwork. You date, cards and wheels. Now here you can see there are different types of wheels are shown in the front page or the first page of the lesson. You can see there are different sizes of wheels, also big and small. Everywhere you can see the wheels and wheels. Now what is the shape of the wheel? The shape of the wheel is round like a circle. जितने भी wheels यहाँ पे दिए हुए हैं, you can see all the wheels are round in the shape of a circle. Now here the activity given is, see how big this wheel is, as I have never seen a wheel like this. You can see this is a wheel of a cart, which is a very big wheel. Then this is the wheel of a bus, cycle, this is of horse cart. और ये आप जो साइकिल के टायर से बच्चे ऐसे खेलते हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ व्हील ओनली. और ये एक व्हील है जो पॉटर यूज करता है टू मेक द पॉट्स. सो यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील्स ऑफ different sizes are given, but basically the shape of the wheel is round. Now you must have seen many such round things around you. List some of your in the notebook. Now we have to think of the things which are round and which we see near us. मतलब हमारे आसपास जो भी कोई ऐसी राउंड चीज़ होती है, वो हमने ऐसी बहुत सारी राउंड चीज़ें देखी होंगी, उनको हमको देखना है और उनके कुछ के नाम हमको नोटबुक में लिखने हैं. जैसे कि बैंगल्स होते हैं विच आर राउंड इन शेप, देन बोल होता है, देन कॉइन्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, टायर होते हैं, मून होते हैं, सन होता है, ग्लोब होता है. ये सारी चीज़ें राउंड होती है. ऑल्सो देयर विच इज़ राउंड इन शेप, जिस पे रोटी सेकी जाती है वो भी राउंड होता है. बाउल होता है, बैंगल्स. आई कैन शो यू वन ऑफ द बैंगल्स दैट आई हैव. दिस इज द बैंगल विच इज़ राउंड इन शेप. यू कैन सी दीज टू बैंगल्स. what is the shape of the bangle? It is round in shape. Then this is the coin which is again round in shape. The coins और bangles तो आपने easily देखे होंगे. बॉल जो घर में होते हैं वो भी राउंड होते हैं शेप में. आजकल तो बॉल्स में वैसे डिफरेंट शेप होते हैं, बट बेसिक द बेस ऑफ द बॉल इज राउंड ओनली. सो दीज आर द थिंग्स विच आर राउंड इन शेप. तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर आंसर में नोटबुक में लिखनी है. Then moving on to page number 82 is round bangle. Have you ever gone to a bangle shop? Yes, I have been at bangle shop with my mom. आप कभी bangle shop पे गए हैं? तो हाँ, मैं अपनी मम्मी के साथ bangle shop पे गए हैं. I can't wear these bangles. These are too small. Now here you can see that 3 sizes of bangles are given, 1, 2 and 3. Guess which of these bangles are of your size. The smallest size जो होगी वो आपके साइज़ की होगी. जो गर्ल्स होंगी वो स्मॉलेस्ट साइज़ की बैंगल्स ये पहन सकते हैं, बाकी 2 साइज़ बड़ी हैं. Now take a wire and make a bangle for yourself. Can your मैडम और मदर वेयर दिस बैंगल? एक आप तार लीजिए, उसको टर्न करके एक बैंगल का शेप दीजिए. क्या वो पहन सकते हैं? माई मदर कैन नॉट और टीचर कैन नॉट वेयर दिस बैंगल. वो एकदम तार है, अगर तार को आप राउंड करके ऐसे बनाएंगे वो बैंगल का शेप तो आ जाएगा, लेकिन वो पहनने के काम नहीं आएगा. A bangle can be used to trace a circle. What are the other things around you that you can use to trace a circle? Now as you know that with the help of a bangle you can trace a circle, as I can show you on a piece of paper. Now this is the piece of paper. Here my bangle will not show the proper circle because there's certain design over here, but basically you can use this to draw the circle. आप इसको ऐसे रख के देखिए, आप अंदर से भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, यहाँ से भी ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, अंदर की साइड से भी. अगर आपको छोटा एक हाथ से आपको पकड़ना पड़ेगा इसको बैंगल को, और ऐसे रफली आई एम टेलिंग यू दैट विद वन हैंड यू हैव होल्ड द बैंगल एंड ड्रॉ द सर्कल लाइक दिस. ये इनसाइड हो जाएगा, और आउटसाइड से अगर आपको ट्रेस करना है तो भी
आप ऐसे पकड़ के उसके चारों तरफ से ऐसे लाइन ड्रॉ करके आप जो है एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. बट यू हैव टू होल्ड दिस प्रॉपरली so that it doesn't move, because I have just holding the mobile in one hand, so I cannot draw it properly. But if somebody can hold this properly, and then I can draw the circle like this. From inside also you can draw, and from outside also you can draw. Both ways you can draw the circle. Then बॉल्स को आप रख के कर सकते हैं, कॉइन्स को कर सकते हैं, प्लेट जो होती है प्लेट को भी आप राउंड कर सकते हैं. ग्लास है, ग्लास का इधर अगर छोटा करना है तो नीचे की तरफ से ग्लास करेंगे, और बड़ा करना है तो ऊपर की तरफ से. साइकिल का जो रिम होता है वो भी राउंड होता है. Now you can see with the help of this glass also you can draw a circle. Take this glass and then ग्लास को आप एकदम अच्छे से ऐसे रखिए. एक हाथ से आपको ग्लास को पकड़ना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो एक ग्लास में ऐसे सर्कल यहाँ पर उसके चारों तरफ ड्रॉ करना है राउंड. और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ग्लास को अगर छोटा सर्कल चाहिए तो ग्लास को ऐसे रखिए, और यहाँ से आप जो है सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. उसके बाद आप जो कॉइन्स है, विद द हेल्प ऑफ द कॉइन्स ऑल्सो यू कैन ड्रॉ द सर्कल लाइक दिस. तो दिस वे यू कैन ड्रॉ द सर्कल्स विद द थिंग्स दैट आर अराउंड यू ईजीली. तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको करके बताई हैं. दिस इज आई कैन शो यू लाइक दिस. देन साइकिल रिम, यू ऑल आर अवेयर ऑफ द साइकिल रिम. सी दिस इज द, in your book the picture is given, this is the cycle rim that the child is playing with. तो ये साइकिल रिम है. Trace a circle with the help of some of these things in your notebook or on the ground. Now this you can do it in your notebook. ये मैं टिक कर रही हूँ, तो ये आपको नोटबुक से करना है. आपको कॉइन से, ग्लास से और बैंगल से, ये 3 चीज़ से आपको सर्कल आपके नोटबुक में ड्रॉ करनी है. यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ कॉइन, विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल एंड विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास. नाउ विच ऑफ द थिंग्स मेक द स्मॉलेस्ट सर्कल. अब ये सारी चीज़ों में सबसे छोटा सर्कल किससे बनेगा? कॉइन से सबसे छोटा सर्कल बनेगा. और बड़ा सर्कल ग्लास से बन सकता है, क्योंकि ग्लास बड़ी है तो ग्लास से भी बन सकता है, नहीं तो बैंगल्स अगर बड़ा है तो बैंगल से भी बन सकता है. नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 83. I hope, dear children, you have learned how to make a circle with the help of the objects that we see around us. Now, games with circles. Children are playing some games. Here you can see some of the children are playing the games with the circle. ये सर्कल में जो है बच्चे गेम खेल रहे हैं. एक फर्स्ट गेम है ये जो है वो. फिर दिस इज योर गेम 1. यहाँ पे जो है पास कर रहे हैं एक दूसरे को ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम 2 है जो 2 बच्चों के बीच में था. ये कॉमनली हम सब भी खेलते थे कि यहाँ पर एक हैंकी पड़ा होता है, और इधर हैंकरचीफ यू हैव टू पिक, whoever picks the first is the winner. There is this round. In this round, one handkerchief is kept or one object is kept here, and whoever picks from both the teams, one member comes and goes around the circle to pick that object. Whoever picks the first is the winner. So ये सारे गेम्स जो हैं वो सर्कल के अंदर खेले जाते हैं. Now, do you play these games? Yes, I play these games. हम ये गेम्स तो खेलते हैं. Which song do you sing when you play the game? Rain, rain go. कोई भी गाना आप लिख सकते हैं as you like. Play these games in your school. ये हम सब स्कूल में खेलते ही हैं. Now, why do we make a circle in each of these games? हम ये सारे गेम्स में सर्कल के साथ क्यों खेलते हैं? क्योंकि अगर सारे बच्चे जो है सर्कल के आसपास खड़े रहेंगे तो सब बच्चों को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी गेम को खेलने के लिए. बिकॉज इन अ सर्कल देर आर नो कॉर्नर्स एंड नो साइड्स, सो एवरी चिल्ड्रन विल गेट सेम अपॉर्चुनिटी, एंड उनको जो है सेम जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी गेम को खेलने के लिए. And importance also for the game. Then what if a rectangle is made? Now if the rectangle is made, then in some games the rectangles are made, but in some games it is not possible to make the rectangle and play. If the rectangle is made, then all the players will not get the equal opportunity. Think of some games यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल्स. ऐसे कौन कौन से गेम्स हैं जिससे आप सर्कल बना के खेल सकते हैं? जैसे कि म्यूजिकल चेयर है, पासिंग द पार्सल है, ये सारे गेम्स में आप सर्कल बनाकर खेल सकते हैं. प्ले विथ बाय मेकिंग द सर्कल्स. सो
You can, if you remember some other games, you can write the names of all those games also in which you make the circle and play the game. Here you have to name only the games in which you make a circle and play. Now अगर हम कुछ ऐसे जैसे क्रिकेट की गेम होती है उसमें रेक्टेंगल, लेकिन जो बाउंड्री होती है वो तो सर्कुलर ही होती है. Page number 84, there's a small story. Making a circle. Nina, Chimpu, and Archana went to play a game. They want to make a big circle on the ground, but they cannot make it by tracing. So Archana tries to draw a circle with a stick. Now यहाँ पर तीन बच्चे हैं, नैना, चिंपू और अर्चना. दे आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अ सर्कल. जब सर्कल बनाने के लिए ग्राउंड पे सोचा तो उन्होंने एक स्टिक लेकर सर्कल बनाना जो है अर्चना ने शुरू किया. वो एक बड़ा सर्कल बनाना चाहते थे लेकिन वो बन नहीं रहा था, इसलिए अर्चना ने एक स्टिक ली और उसने सर्कल बनाना शुरू किया. यू कैन सी दिस. चिंपू एंड नैना, इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल. चिंपू और नैना बोलते हैं अर्चना ने जो सर्कल ड्रॉ किया वो सर्कल जैसा नहीं लग रहा है. अर्चना, ओके, वाई बोथ डोंट बोथ यू ट्राई. तो अर्चना ने बोला तुम दोनों भी ट्राई करो. चिंपू एंड नैना बोथ टेक सर्कल मेक सर्कल्स ऑन द ग्राउंड. नाउ थ्री ऑफ देम मेक द सर्कल्स ऑन द ग्राउंड लाइक दिस. नाउ इज एनी ऑफ दीज a good drawing of a circle? Discuss. No, nothing. We cannot see the circles only, so we cannot say that it is a good drawing. Can you draw a circle on the floor with a chalk? Yes, we cannot. We can also draw a circle in your notebook using a pencil. With the help of a pencil, you can draw a circle. Look at the circles drawn by your friends. Who has drawn the best circle? Now you can simply, तो हम लोग बहुत इजीली करते हैं, सारा दिन चौक से खेलते हैं तो ज़मीन पे जो है हम सर्कल्स बनाते रहते हैं. Page number 85. Now here is how you can make a circle with the help of a rope. Making a circle with a rope. अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि आप गोल राउंड सर्कल बना सकते हैं तो with the help of a rope and a chalk you can make a circle. Archana decided to use nails and a thread to make a circle on the ground. Now Archana, when they tried to make the circle with the help of a stick, it was not properly coming out. Now Archana thought of making a circle with the help of nails and the thread. That means at the one end the thread has to be tied with the nail and other hand जो है आप you can see this, they are making the circle. She took a thin rope and tied nails on both the ends of the rope. मतलब एक रोप ली, जितना बड़ा सर्कल बनाना है उस हिसाब से एक लेंथ का रोप लेना है. You have to take the rope and at the both ends of the rope you have to tie two nails. दो जो है कीले जो हैं वो दोनों एंड पर रोप के लगा देनी है. Then mark a circle with the help of the thread. Look at the picture and see how they are making the circle. Now this is very easy. अगर आप यहाँ से एक एंड को आपको फिक्स रखना है जो है आप मिट्टी में अगर if you are making it on the ground you have to fix one end at one place and with the help of the other end and the nail you can draw the circle like this goal round. You have to fix it this one end and then leave this end and with the help of the other end which is free and the nail on that side you can go round like this and draw the circle. This way you can draw the circle of the same size. Means ऐसा नहीं होगा कि इस साइड से सर्कल बड़ा हो गया और इस साइड से छोटा हो गया. Everywhere the radius and the diameter or the diameter of the circle will be the same because this thread that we have used, that is the radius of the circle in this सर्कल. तो ये जो सर्कल में जो थ्रेड है, जो लेंथ ऑफ द थ्रेड और द रोप है, दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो दिस वे यू कैन ड्रॉ द सर्कल इफ यू डोंट हैव अ कंपास. नॉर्मली वी ड्रॉ द सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ कंपास, बट इफ यू डोंट हैव देन यू कैन ऑन द ग्राउंड और समवेयर वेयर यू नीड टू ड्रॉ. अगर नेल्स नहीं है, आपको ग्राउंड में चॉक से ड्रॉ करना है तो एक एंड को आप फिक्स करिए एक और या टेल समबडी टू होल्ड द वन एंड ऑफ द थ्रेड एंड द अदर हैंड ट्राई द chalk and you can easily draw the circle. Now do the activity in small groups. Each group should take a rope of different length. See that these circles are made by different groups. Now a rope of different lengths can be taken to make the different size circle. Which group has made the smallest circle? What is the length that we are not going to do? Does a longer rope make a bigger circle? Yes. If the length of the rope is more, then obviously the circle that will be made by that rope will also be bigger. If the length of the rope is less or the length of the rope is
is small, then the small circle will be drawn. So the size of the circle will depend upon the length of the rope that you have taken. Bigger the length of the rope, the bigger will be the circle, and smaller the length of the rope, the smaller will be the circle. So can you say why? Because longer rope acts as a bigger radius, so the size made by it will be longer. तो बड़ा सर्कल, बड़ी रोप तो बड़ा सर्कल होगा. Now see what your friends have drawn. Discuss the length of the radius they measured. Is it the same of yours? मतलब सर्कल ड्रॉ करने के बाद अगर आप 2-3 ग्रुप में जने ऐसे 2-3 ग्रुप्स बनाकर आप अलग अलग साइज के सर्कल ड्रॉ करिए और उसके बाद मेजर करिए. The length of the rope used is equal to the length of the radius of the circle. Now here you can see this is the circle that is shown here, and the point where you have fixed that, one point of the thread where you have fixed, that is called as the center of the circle. वो एक center होता है. वहाँ से जो circle के boundary line तक का जो distance होता है, जो length of का the rope था वहाँ से, that is called as the radius of the circle. You can see this is the length of the rope that is here. So this part, this length of the rope is called as the radius of the circle, just denoted by R. ये radius को हम R से denote करते हैं. जो भी circle होता है, circle में there are 3 things. One is the center of the circle. That means one point is there which is the center from with the help of which the entire circle is drawn. So that is the center of the circle. Then one is the radius of the circle. This is called as the radius of the circle, the length from the center to one end of the circle. That is called as the radius of the circle. Moving on to next page, page number 86. Draw the radius of the Draw the radius of this bangle using a ruler. Measure the length of the diameter. Now यहाँ पर जो रेडियस है, एक हमको यहाँ से देखिए बैंगल है, एक रूलर से मतलब कि एक स्केल से आपको यहाँ से जो है सेंटर से एक लाइन यहाँ पे खींची हुई, इसको हमको मेजर करना है और इसका हमको रेडियस लिखना है. इस लेंथ को मेजर करके इसका रेडियस लिखना है. ड्रॉ द रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स. अब यहाँ से हमने एक सर्कल्स का रेडियस मतलब सेंटर से दिस पॉइंट टू द लेंथ ऑफ द सर्कल, मतलब कि सर्कल की जो लाइन है वहाँ तक जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस. इन बोथ द सर्कल्स वी हैव टू ड्रॉ. सो द radius of the bigger circle will be more. Guess which circle has the longer radius? The bigger circle has the longer radius. यहाँ पर जो 2 circles दिए हुए हैं तो उसमें एक green circle है और एक दूसरा जो है वो purple blue circle है. Measure the radius of both the circles using a ruler whose length of the write the length of the radius. इसकी 1 centimeter length है, इसकी 2 centimeter length है, ब्लू की 2 है और इसकी 1 centimeter है. तो जो बिगर सर्कल है उसका रेडियस ज़्यादा होगा और स्मॉलर सर्कल का रेडियस कम होगा. Now here find out, measure the radius of the wheels of a bicycle or a bullock cart. Can you use a thread or a measuring tape? Now because with the help of measuring tape we cannot measure the radius of a circle, so we can use the thread, and with the help of the thread we can measure the radius of a circle of a wheel, and then we can, the length of that thread is put on the measuring tape to measure the radius of a wheel. Are all the wheels of a bicycle or a bullock cart are of same size radius? Yes. Have you seen a tractor or a road roller? Yes, we have seen a tractor and road roller both. Which is the biggest wheel you have ever seen? of a डंपर भी देखा हुआ है. फिर मेरी गो राउंड का जो जायंट व्हील होता है वो भी बहुत बड़ा, मेरी गो राउंड में जो व्हील होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है. Are all the wheels of a tractor or a road roller are of same size? No, the back wheels are of different radius. जो front wheels और the back wheels होते हैं, ट्रैक्टर में भी जो होता है front wheel छोटे होते हैं और back wheels बड़े होते हैं. तो जो front wheels होते हैं, the smaller the size of the wheel, the smaller will be the radius, and the back wheels are bigger, so the radius of the back wheels is more compared to the radius of the front wheels. So dear children, up to this page number 86, today we will complete it. On the next turn we will do page number 8 from 87.